What's up? Welcome to ArtTube. I'm Ritu, and in today's video I'll show you how to make watercolor backgrounds. I'm going to use salt. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होने वाला है. So without further ado, let's get started. I will be using Bristow Artist watercolor paper, Camel Artist watercolor, few round brushes, salt and water. यहाँ पे मैं ले रही हूँ Viridian Hue. Now I'm taking Cobalt Blue and now I'm taking Lemon Yellow. You can choose any color you like. Now I'm applying plain water on the paper like this. यहाँ पे मैं wet on wet technique का यूज़ करूँगी. अब ब्लू कलर मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. Now I'm taking Viridian Hue and इसे भी अप्लाई कर रही. And now I'm taking this lemon yellow and applying it like this. Now I'm applying more layers of each color, as you can see. Now I'm sprinkling some salt like this. And again I'm applying colors like this. जब तक ये सूखता है, let's make our second background. And for that I'm taking small amount of water and mixing about half teaspoon of salt into it. And applying the salt water with the help of a brush on the paper. यहाँ पे मैं white and blue color mix कर रही हूँ to get light blue color. And इसे इस तरह से ब्रश के टिप को डैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ. एंड सी गाइस, सॉल्ट वाटर की वजह से ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है. एंड इसी तरह से मैं बाकी एरिया को भी कवर करूँगी. And now I'm using white color like this. Now coming back to our previous background, salt अच्छे से dry हो चुका है, so I'm removing the salt with my finger like this. So our first background is ready. Now I'm writing a quote that says never give up. एंड ये भी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कीप गोइंग कीप ग्रोइंग. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, then like, subscribe and share. And video कैसा लगा, do let me know in the comment box, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye.